Okay, so let's start. These are the various questions from the biology section. Okay, हम लोग यहाँ पे पहले biology के क्या क्या questions है वो discuss कर लेते हैं. So question number 11 यहाँ पे simply बोला गया है A और B ये जो vessels है इनके कुछ functions लिखे गए हैं यहाँ पे and you have to choose which statements are right. कौन से statements right है. So पहले A, so it carries the carbon dioxide rich blood to the lungs. Yes, this is right because this is your pulmonary artery. We know that artery किसको बोलते हैं? जो heart से कोई भी suppose blood irrespective of oxygenated or deoxygenated अगर heart से कोई भी vessel blood को लेके जा रहा है उसको हम बोलते हैं artery. अगर वो lungs में लेके जा रहा है it is pulmonary artery. और जो लेके आ रहा है heart तक उसको हम लोग बोलते हैं veins. So क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक नंबर पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है ब्लड वेसल ए के बारे में वो राइट है. ब्लड वेसल बी दिस इज आल्सो राइट बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स. यस दिस इज ट्रू. दीज आर पल्मोनरी वेन्स. वो क्या कर रहे हैं? ब्लड को लंग्स से लेके आ रहे हैं. कहाँ तक लेके आ रहे हैं? एट्रियम तक लेके आ रहे हैं. देन सी दिस इज थर्ड वन. दिस इज आल्सो राइट. लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट्स रिसीव blood. Okay, this is also right, but this fourth one is wrong. So blood vessel से यहाँ पे बोला गया है right atrium has thick muscular wall, which is wrong because we know the walls of ventricles are thicker. जो ventricles के wall होते हैं वो thick होते हैं. Okay, ये statement wrong है. So the answer will be D. That means 1, 2 and 3 these statements are right. Okay, so let's move to the next question. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? ओके, दिस स्ट्रक्चर इज योर स्टोमाटा और स्टोमाटल apparatus भी हम लोग बोल सकते हैं. ओके, यहाँ पे गार्ड सेल दिए गए हैं एंड और यहाँ पे क्या दिया गया है? साइड में सराउंडिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स भी है. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है तुम्हारा? Which of the following conditions is true for the state of stomata? अभी ये स्टोमाटा का क्या कंडीशन है? ये क्लोज स्टोमाटा है. दिस इज नॉट एन ओपन स्टोमाटा, इट्स अ क्लोज स्टोमाटा. अभी क्लोज स्टोमाटा होने से क्या क्या कंडीशंस होते हैं? दैट मींस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल. जब गार्ड सेल से वाटर फ्लो बाहर की तरफ होगा तब वो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे. एंड जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो गए तब क्या होगा? स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा. सो द आंसर इज सी. ओके, इजी वन. नाउ यहाँ पे assertion reason का एक क्वेश्चन है 33 नंबर. लेट्स सी. assertion में यहाँ पे बोला गया है नाइट्रोजन इज एन essential element for plant growth and in taken up by the plant in the form of inorganic nitrates and nitrites. Yes, this is true. The soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals for the plants. This is also true. But the reason is not explaining the assertion. Okay, that's why B will be the answer. यहाँ पे B होगा. अगर correct explanation होता तब हम लोग A बोलते. Okay, so 33 का answer होगा B. Okay, so next, okay, 12. Question number 12 में क्या दिया गया है? In living organisms during respiration, which of the following products are not formed if oxygen is not available? कौन सा फॉर्म नहीं होता है? This is carbon dioxide and water. Easy question. Because यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, this is aerobic respiration. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, this is anaerobic respiration. So यहाँ पे बोला गया है which of the following products are not formed if oxygen is not available? If oxygen is available, carbon dioxide and water is formed. Okay, this is aerobic respiration. Next, question number 13. Choose the correct statements with reference to a single cell organisms. अच्छा, तो ये single cell organisms के बारे में एक पहले क्या बोला गया है? Complex substances are not broken down into simpler substances. Okay, then simple diffusion is sufficient to meet requirement of exchange of. Yes, this is true. So second one is true. Specialized tissue perform. No, there is no such kind of specialized tissue in
योर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज वो एक ही सेल से बने हुए हैं। टिश्यू कब आएगा? जब मल्टीपल सेल्स होंगे तभी तो टिश्यू आएंगे। So next fourth one, entire surface of the organism. Yes, this is also true. Entire surface of the organism, it's in contact with the environment. So the second one and the fourth one, these two are true. So the quick answer will be, oh, sorry, it's C. C is the right answer. Okay. Next, question number 14. So which among the following is not removed as waste product from the body of plant? Okay, resins और गम तो होता है, ड्राई लिप्स भी होते हैं, एक्सेस वाटर भी ट्रांसपिरेशन के जरिए बाहर निकल के जाते हैं। यस, यूरिया। सो यूरिया इज द आंसर। जो एनिमल्स होते हैं वो यूरिया को रिलीज करते हैं, प्लांट्स डायरेक्टली यूरिया रिलीज नहीं करते। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 15 में क्या दिया है? लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे पहले हमें समझना है ये ए क्या है। ओके, यहाँ पे बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ ए व्हिच इज गिवन इन द डायग्राम ड्यूरिंग द ब्रीडिंग साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, द ए इज नथिंग बट इज द डायफ्राम। ओके, यहाँ पे डायफ्राम के बारे में बोला गया है और यहाँ पे क्या बोला गया है? व्हिच आर करेक्ट। सो हमें करेक्ट वाला स्टेटमेंट्स हमें यहाँ से ढूंढना है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। लेट्स सी, यहाँ पे इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग। नो। इट फ्लैटन एज वी इनहेल। ओके, यस, दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। इट गेट्स रेज्ड एज वी इनहेल। जब हम इनहेल करते हैं क्या वो ऊपर जाता है? नो, दिस इज रॉन्ग। ओके, देन इट हेल्प्स the chest cavity to become larger. Yes, this is also true. So 2 and 4, these are true. Okay, so 2 और 4 कहाँ पे है? So section A, that is the option A is correct. Okay, 15 में क्या होगा? Option A will correct. Next, और एक assertion and reason. So यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को blur दिखाई देगा, मैं पढ़ के देता हूँ क्या है यहाँ पे। Assertion दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टोमक। ओके, दिस इज ट्रू। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड creates an acidic medium to activate protein digesting enzyme. Yes, HCl का जो मेन दो काम होता है उनमें से एक क्या होता है? जो पेप्सिन होता है, एक्चुअली वो पेप्सिनोजेन के हिसाब से होता है। पेप्सिनोजेन के ऊपर जब HCl गिरेगा, ओके, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं पेप्सिनोजेन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन इट कन्वर्ट्स टू एक्टिवेटेड पेप्सिन, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू एंड दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, सो इट विल बी ए। यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का ए होगा। नेक्स्ट 36। सो यहाँ पे क्या बोला गया है? द स्टूडेंट इज आस्क्ड टू राइट द स्टेपवाइज प्रोसीजर टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, ही रोट द फॉलोइंग स्टेप्स। द रॉन्गली वर्डेड स्टेप्स मतलब कौन सा स्टेप्स रॉन्गली राइट मतलब लिखा गया है? सो बोथ plotted plants are kept in dark for at least 3 days. Yes, this is right. Then bottom of the bell jar is sealed to make the airtight, make them airtight. Yes, this is also right. Both plotted plants are kept in sunlight. No, this is wrong. Okay, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे KOH है। Okay, why this is KOH is here? Because KOH will absorb the carbon dioxide. Okay, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। So a leaf from both the plants is taken to taste the berry. Yes, this is also right. So यहाँ पे C is the wrong one because यहाँ पे पूछा गया है wrongly worded steps. So C is the wrongly worded steps. Next, okay. Respiratory structures of two different animals, a fish and human being are shown. Okay. यहाँ पे respiratory structure gills दिखाया गया है fish में और alveoli दिखाया गया है हमारे humans में या animals में। Okay, यहाँ पे क्या बोला गया है? Observe A and B and select the characteristics that hold true for both of them. दोनों के लिए कौन से right है? तो यहाँ पे बोला गया है A में क्या बोला गया है? Both are placed internally in the body of animal. Okay,
अच्छा, नो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, गिल्स नहीं होते हैं इंटरनली प्लेस्ड, बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर, यस दिस इज राइट, दोनों में ही मॉइस्ट सरफेस होते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हो पाए। ओके, तो 37 का बी होगा। स्टिल लेट्स सी व्हाट आर द अदर टू ऑप्शंस, बोथ आर पोरली सप्लाइड विथ नो, दिस इज रॉन्ग, पोरली सप्लाइड होगा तो कैसे गैसेस एक्सचेंज होगा, और जो गैसेस एक्सचेंज होगा उन गैस को कैसे दूसरे जगहों पे लेके जाएंगे। सो in both the blood returns to the heart and being oxygen, no, this is not. Okay, so the correct answer is option B. Now let's see what is this. So observe the diagram of the activity given below. What does it help to conclude when the person inhales, exhales into the test tube? Okay, very easy question. Okay, जब एक्सेल करेगा लाइम वाटर में तब क्या होगा? ओके, 38 है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे होगा आंसर इज, लेट्स सी, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर, नो दिस इज रॉन्ग। हम जब इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना ज्यादा होता है, जब हम निकालते हैं तभी तो ज्यादा होता है। सो फर्मेंटेशन, नो, यहाँ पे फर्मेंटेशन का कोई भी नहीं है। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सेल्ड एयर, यस दिस इज राइट। हम जब एक्सेल करते हैं एयर को तब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा रहता है। इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ओके, 41 में क्या दिया गया है? द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन डियर इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन टाइगर। रीजन फॉर दिस, अच्छा, ये है टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, बिकॉज द फूड, सपोज लाइक cellulosic food that takes more time to be digested. That's why their intestine is comparatively larger than the carnivores. Carnivores में जो मीट डाइजेस्ट होगा उसमें इंटेस्टाइन इतना लार्ज नहीं होना है। मेनली प्रोटीन डाइजेशन तुम्हारा कहाँ पे हो जाएगा? यस, इन द स्टोमक, स्टोमक में हो जाएगा, है कि नहीं? तो इंटेस्टाइन किनका लंबा होगा? जो हार्बिवोर्स होंगे उनके लंबे होंगे, मतलब लॉन्ग होंगे। सो टाइप ऑफ फूड कंज्यूम होगा आंसर। नेक्स्ट 42, identify the two components of phloem that helps in the transportation of food in plants. Very easy, phloem के दो कौन से कंपोनेंट हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर हम लोग ट्रांसलोकेशन भी बोल सकते हैं, जिनमें हेल्प करता है। वेरी इजी, these are sieve tubes and companion cells. Okay, what are the other two components? These are phloem parenchyma and phloem sclerenchyma. They will not help. Only sieve tubes and companion cells, they will help in this process. Remember the diagram? This is the sieve tubes, and along with them, the companion cells are also present. Sieve tubes does not have any nucleus, and companion cells have the nucleus, and companion cells also control the sieve tubes or sieve tube cells. Okay, next, okay, this is a case-based question. Okay, figure दिया गया है यहाँ पे, this is a artificial kidney. ओके, या इस प्रोसेस को डायलाइसिस बोला जाता है। जिनका किडनी खराब हो जाता है तब क्या किया जाता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। ओके, सो दिस कॉमन टाइप ऑफ डायलाइसिस कॉल्ड हेमोडायलाइसिस, इसको बोला जाता है। सो सच एक्सेस ऑफ सॉल्ट, यूरिया, इन सबको क्या कर देते हैं? रिमूव करने के लिए ये यूज किया जाता है। किडनी फेलियर जिनका होता है उनमें वो यूज होता है। So let's see what are the various questions related to this case. Okay, 53. The hemodialyzer has semi-permeable lining of the tubes which help to, अच्छा, यहाँ पे जो hemodialyzer होता है उसमें semi-permeable membranes होते हैं। वो membranes का काम क्या होता है? Okay, यहाँ पे कहाँ पे रहेंगे? This is the membrane. यहाँ पे membranes है। अच्छा, यहाँ पे रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ। These are the membranes. यहाँ पे membranes का काम क्या होगा? So no, its maintain osmotic pressure नहीं है। It to filter nitrogenous waste from the dialyzing, no, not from the dialyzing solution. It passes in passing the waste products in the dialyzing solution. Yes, देखो dialyzing solution में जो waste product है वो dialyzing solution में जाना है। Okay, हमारे blood से dialyzing solution में pass होता है, तो answer will be C. Next, 54. Which of the following is not a function of artificial kidney? Artificial kidney का कौन सा function नहीं है? Not दिया गया है यहाँ पे, कौन सा function नहीं है?
Okay, to remove nitrogenous waste, yes, this is the function. To remove excess fluid from the blood, okay, this is right. To absorb, no, it cannot absorb. यहाँ पे कोई भी reabsorption वाला part यहाँ पे नहीं होगा. To filter and purify the blood, yes, this is also right. So C is the answer. C is wrong. It is not the function. Next, 55. The used dialyzing solution is rich in, मतलब dialysis हो गया है, हो जाने के बाद जो dialyzing solution है उसमें क्या ज्यादा रहेगा? Okay, definitely यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स वहां पे ज्यादा रहेंगे, बिकॉज फिल्ट्रेशन हो गया है, हमारे ब्लड से यूरिया अभी घट के कहाँ पे चला गया? डायलाइजिंग सोल्यूशन में चला गया. ओके ओके, नेक्स्ट, probably this is the last one. Which part of the nephron in human kidney serves as the function of the reabsorption and reabsorption of certain substances? Reabsorption of certain substances मतलब एमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, वो सब कहाँ पे रीअब्सॉर्ब होंगे? ग्लोमेरुलस में नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ फिल्ट्रेशन होगा. बोमेन्स कैप्सूल में भी नहीं होगा, बिकॉज बोमेन्स कैप्सूल में क्या होगा? वहां पे भी फिल्ट्रेशन नहीं होगा. कलेक्टिंग डक्ट वहां पे भी नहीं होगा. मेनली कहाँ पे होंगे? ट्यूबल्स. ट्यूबल्स का मतलब पीसीटी एंड डीसीटी. सो सपोज यहाँ पे मैं एक रफली डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो ये होगा सपोज. ओके, सो पीसीटी एंड डीसीटी कौन से है? सो दीज आर mainly tubules. Okay, यहाँ पे होंगे. Okay, some of the water is again reabsorbed in the Henle's loop also. Glomerulus, Bowman's capsule, वो सब कहाँ पे है? These are present in this section. यहाँ पे सिर्फ filtration होगा. Okay, so these are the questions of your term 1 test. Okay, so hope सभी का सभी questions right हुआ है. अगर कुछ भी doubt है, then you people can ask me. Okay, thank you.